हेलो फ्रेंड्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं और उसका सिंपल यूज़ देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के कुछ फीचर्स हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर का ये इंटरफेस है दोस्तों। आप यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाके अपने जो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर है उसकी जो कलर स्कीम है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट दिस मोनार्की डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम। So guys, you see my color scheme has changed. In the same way, हम व्यू पे जाके अपनी जो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर है इसके लेआउट में जाके इसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं तो आप एक से ज़्यादा फाइल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। फॉर दिस पर्पज़ मैं 3 कॉलम फाइल चूज़ करूँगा। फर्स्ट फाइल HTML एंड सेकंड फाइल CSS एंड थर्ड फाइल जावास्क्रिप्ट। इन दिस वे फ्रेंड्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। जितनी भी फाइल हम चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। सो नाउ अगेन गो टू व्यू एंड लेआउट टू गो टू आवर डिफ़ॉल्ट सिंगल पेज। सो ये तो थी हमारी सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर की दोस्तों कुछ बेसिक सेटिंग्स। हम इसके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्लगइन्स भी इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को फुल फंक्शनली यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, प्लगइन्स यूज़ करने के लिए हमें पहले सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे राइट करेंगे Sublime Text Editor. As you can see, this one, Sublime Text Editor package install. Just click on it and select the first one, installation package control. And if you are using Sublime Text 3, then you can use this code. If you are using Sublime Text 2, then you can use this code. As we have Sublime Text 3, then we will copy this code and copy from here and just go to your Sublime Text editor and now you have to go to your view and show console. You have to now just paste your code here and press enter. As you can see, this is taking some time to install the packages. We will wait for that. Now we will type Control Shift plus P and here you can see the install package. Just click on it and you can see at the bottom it installing the package. It will take some seconds and we are ready to go. So guys, from here you can add plugins